Dear listeners, today we'll discuss Way 5 that how can help you yourself about improving your communication skills, basically English communication skills. Keep in your mind that in this world, every language has four skills. जो भी language है, either it is Dutch or Nosh or German or Sindhi, Balochi, Punjabi or English. It has four core skills. Every language has four core skills. चार उसकी जो है वो skills होती हैं. कौन सी? Listening, reading, writing और speaking. और किस तरह से हम अपनी जो है वो इन फोर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? It's very easy and it's very interesting. Number one is improve your listening skills by listening news. ठीक है, आप इसमें कोई आपको रिकमेंड नहीं कर सकते किस चैनल की आप न्यूज़ सुने. वट एवर द चैनल यू लाइक, वट एवर द मूवीज़ और ड्रामाज और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़, जो मूवीज़ जो चीज़ें आपको जो है वो पसंद हैं, मैचेस की आपको जो है वो कमेंट्रीज़ पसंद हैं, तो अपनी इंग्लिश जो है वो स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू लिसन, यू हैव टू वॉच मूवीज़, you have to listen lectures on media, you have to listen lectures on YouTube or Facebook. So many people, they are wasting their time on Facebook in useless activities. Why don't you try to improve yourself just for a few minutes? अपनी ज़ात के लिए आप 10-15 मिनट्स क्यों नहीं निकालते? आप उस पर ऐसे इंग्लिश की मूवीज़ क्यों नहीं सुनते? इंग्लिश के मैचेस की कमेंट्रीज़ को, इंग्लिश सॉन्ग्स को, इंग्लिश डिबेट्स को, इंग्लिश लेक्चर्स को आप सुने. जिस तरह से आप सुनेंगे उसी तरह से आप स्पीक करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं से आप सुनते हैं एक वर्ड चांस, तो आप आगे स्पीकिंग में भी आप चांस ही कहेंगे. लेकिन अगर आप अच्छे प्रोनाउंसिएशन और अच्छे एक्सेंट के साथ सुनते हैं कि आई मेट विद माई फ्रेंड बाय चांस, तो आप इसी को आगे जो है वो कॉपी करेंगे. तो इस तरह से आप जो है वो लिसनिंग के ज़रिए से अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं. डियर लिसनर्स, आपको पता है कि बचपन में बच्चा जो है वो सबसे पहले सुनता है और उसके बाद बोलता है. मौलवी साहब का लेक्चर पहले हम सुनते हैं, फिर उसके पीछे जो है हम बोलते हैं. अगर हम अच्छा सुनेंगे, यानी जो मैंने पिछली स्लाइड में भी कहा था कि गुड लिसनर इज़ ए गुड स्पीकर, तो अगर अच्छा आप स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा जो है वो लिसनर बनना होगा. आफ्टर लिसनिंग डिफरेंट एंड न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स, you can use those words, you can improve your speaking skills, you can improve your vocabulary. उसी वर्ड्स को आप अपने माइंड के अंदर न रखें. उन्हीं वर्ड्स को, जैसे हम पैसा जेब के अंदर रखें, सर्कुलेट नहीं करेगा तो हम तरक्की नहीं करेंगे. सिमिलरली यूज़ योर दोज वर्ड्स, दोज लर्नड वर्ड्स, जो अपने अल्फाज कहीं सीखे वो अपने दोस्त के साथ, जब आपकी उसके साथ कंपनी होती है स्पोकन इंग्लिश की, तो वो वर्ड्स आप जो वोकैबुलरी के यूज़ करें. यू कैन स्पीक द लिसन एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन. अगर आपने ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट को सुना है, उनकी प्रोनाउंसिएशन को सुना है, जो आप लाइक करते हैं आप उसको अपनाएं. आप देखेंगे कि आपकी स्पीकिंग के अंदर दिन ब दिन जो है वो एक अट्रैक्शन जो है वो पैदा होती चली जाएगी. तो यू कैन कॉपी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. तो इसमें फोर स्किल्स को, लिसनिंग और स्पीकिंग, अगर हम अच्छा जो है वो लिसन करेंगे तो फिर अच्छा स्पीक करेंगे. सिमिलरली अच्छी राइटिंग के लिए, अच्छी राइटिंग खुशखती नहीं, यानी क्रिएटिव राइटिंग लिखने के लिए, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्कर्सिव राइटिंग या फिर नैरेटिव राइटिंग करने के लिए आपको बुक्स रीड करना पड़ेंगी, आपको न्यूज़पेपर्स रीड करना पड़ेंगे जो आपको पसंद हैं. वो आर्टिकल्स, वो स्टोरीज़, वो एसेज वो आप रीड करें. इससे क्या होगा? आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी. वोकैबुलरी इंप्रूव होने से आपकी लिसनिंग, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी और इस तरह से आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव हो सकती है. तो फोर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो लिसनिंग और रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त. डियर लिसनर्स, जब से हम बात कर रहे थे कि न्यूज़पेपर्स को, बुक्स को, आर्टिकल्स को, स्टोरी बुक्स को, डिफरेंट एसेस को जो है वो हमें पढ़ें जो हम लाइक करते हैं. इसका बेनिफिट क्या होगा कि यू विल इम्प्रूव योर वर्ड्स, यू विल इम्प्रूव योर वर्ड बैंक, यू विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, यू कैन प्ले विद वर्ड्स. जब आपके पास बैंक के अंदर पैसा होता है, यू फील हैप्पी. सिमिलरली व्हेन देयर विल बी लॉट ऑफ वर्ड्स इन योर माइंड,
in your word bank, then you can use those words in writing and speaking. You can impress others. You can improve your knowledge. You can improve your vocabulary. And if you will have good and maximum vocabulary, then you will be able to apply that vocabulary on story writing, letter writing, essay writing, application writing, or you will be able to read and understand newspaper. You will be able to comprehend different रिटन मटेरियल. आप जो चीज़ लिखी हुई होगी आप उसको समझने के काबिल हो सकेंगे. जब आप चीज़ को समझ लेंगे then you can become a good speaker, good writer, good reader. आप उसको डिस्कस कर सकते हैं. You will be able to translate into English and you will also be able to translate into Urdu. کہ جب آپ بوتھ ایک لینگویج تو آپ جانتے ہیں اور جب آپ کے ڈفرینٹ وکیبلری کے ورڈز آپ کے مائنڈ میں ہوں گے تو آپ کے لیے ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایزی ہو جائے گی. یو ول فیل ایزی ٹو رائٹ اباؤٹ یور وزٹس ٹو ڈفرینٹ پلیسز. کہ آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں اور آپ ایک نیریٹو رائٹنگ کرتے ہیں, آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. یو کین رائٹ یور اون ڈائری. یو کین رائٹ اباؤٹ ڈفرینٹ میچز. یو کین رائٹ اباؤٹ ڈفرینٹ انسیڈنٹس. یو کین رائٹ اباؤٹ یور پلان, یور وزٹس. جہاں پہ آپ جاتے ہیں, سیر کرتے ہیں, آپ اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس وکیبلری ہوگی, آپ کے پاس آئیڈیاز ہوں گے, آپ نے چیزوں کو دیکھا ہوگا, آپ کے پاس رائٹنگ سکل ہوگی, تو پھر آپ کی جو ہے وہ 4 کور سکل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ امپروو ہو جائیں گی. اینڈ ان دس وے یو ول بی ایبل ٹو رائٹ اباؤٹ یور اون ایکسپیرینسز. جس طرح سے آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز اور روٹین میٹرز کو ڈسکس کر کے اپنی انگلش کو امپروو کر سکتے ہیں, سملرلی یو کین رائٹ اباؤٹ یور اون ایکسپیرینسز. اینڈ اٹ از ویری گڈ وے ٹو امپروو یور رائٹنگ اسکل, your speaking skill, your listening skill, your reading skills. You need to listen to speak and read to write. آپ کو بولنے کے لیے سننے کی ضرورت ہے اور آپ کو رائٹ کرنے کے لیے ریڈنگ کی ضرورت ہے. اٹ از ویل سیڈ, اے گڈ لسنر از اے گڈ اسپیکر. جتنا آپ اچھا جو ہے وہ سنیں گے, اٹینٹیو ہو کے سنیں گے, آپ کی اسپیکنگ کے اندر جو ہے وہ اتنا ہی اضافہ ہوگا. جتنی آپ جو ہے کیئرفل ہو کے ریڈنگ کریں گے اتنا ہی آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ امپریسو ہوتی چلی جائے گی. اپنی انگلش کمیونیکیشن سکلز کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اور ود ان شارٹ ٹائم بہتر کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو آپ اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ سوال جو ہیں وہ سوال کی صورت میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹینشن ہو, کوئی کویشچن ہو, کوئی کوئری ہو, اور نیچے دی گئی ای میل پر ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو.